आज हम इस सीरीज़ की एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसकी n टर्म दी गई है। आइए रेशियो टेस्ट के ज़रिए इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग लिमिट n approaches to infinity, after solving the fraction an over an plus 1, we get n factorial over alpha into alpha plus 1 into alpha plus 2 dot dot alpha plus n minus 1 into alpha plus 1 alpha plus 2 dot dot, putting the values n plus 1, we get alpha plus n over n plus 1 factorial. Here we will get limit n approaches to infinity an over an plus 1 is equal to limit n approaches to infinity alpha plus n over n plus 1. यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू अल्फ़ा ओवर n प्लस 1 ओवर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n. n और n आपस में कट जाएंगे और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अल्फ़ा ओवर n प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n हमारे पास आंसर आएगा। लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर an plus 1. The ratio test fails here. Therefore, when limit n approaches to infinity, an over an plus 1 is equal to 1. The ratio test fails here. अब हम राबीज टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू an over an plus 1 minus 1 is equal to limit n approaches to infinity alpha plus 1 over n plus 1 minus 1. जैसा कि लिमिट n approaches to infinity n into an over n plus 1 minus 1 is equal to limit n approaches to infinity alpha plus 1 over n plus 1 minus 1 के बराबर है। It is equal to limit n approaches to infinity alpha plus n minus 1 over n plus 1. It is equal to limit n approaches to infinity n minus n कैंसिल हो जाएंगे alpha plus 1 over n plus 1. यहाँ पर n लिखना भूल गए, इधर भी n लिखें। इससे निचले वाले स्टेप में भी n लिखना है और इससे अगले स्टेप में भी n लिखना है। On solving, we write it as it is equal to limit n approaches to infinity n over n plus 1 into alpha minus 1 over 1. अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n over
n कॉमन ले लें, 1 plus 1 over n into alpha minus 1. Here we get its answer. Limit n approaches to infinity, n into an over an plus 1 minus 1 is equal to alpha minus 1 by the Rabi's test. The series an converges if alpha minus 1 is greater than 1. It implies that alpha is greater than 1 plus 1. It implies that alpha is greater than 2. By the Rabi's test, the series an diverges if alpha minus 1 is less than 1. It implies that alpha is less than 1 plus 1. It implies that alpha is less than 2. Like and subscribe my YouTube channel to get more videos on mathematics.